It's important for me to make this point at this stage of the conversation, that please remember to not um, box yourself in any stereotype, whether it's in context of a woman or it's in the context of a man. You are unique, and it's important to understand that beyond the gender stereotype, either identifying with other women or men. And why I talk about stereotypes is because biases emerge from the stereotypes that get ingrained in our subconscious mind through socialization as we grow up. And to be mindful of our uniqueness of our strengths and challenges, of our journeys and our aspirations, and then keep breaking the biases and moving on. So before I go any further, I would like to, any of you to state a few biases that you recognize in your life or around you. And anyone can unmute themselves or do a show of hand and answer this question. Let's see if how well do we understand the biases before we talk about how to break them and why we need to break them. So anybody would like to answer that? Any of the wonderful empowered women here would like to take a go at what they understand as bias? Any idea on what biases are we talking about here before we talk about breaking them? You could even put it in a chat box, or you could unmute yourself and speak. And please don't hesitate. There is no right and wrong answer. Again, it's your unique perspective to what you feel is a bias. Anybody would like to respond there? Is there anybody who'd like to respond to what they perceive or they think is a bias that is prevalent, or that we need to break, actually, before we understand how to break it? Anybody would like to share their story or their journey of how a bias held them back, or what are the biases, multiple, that came in their life, which they either overcame or held them back? Is there anybody who'd like, or shall I go ahead without, keeping it quiet? So yes, I have one response that says, from Sakshi, since it's to everyone, I don't need to keep it anonymous, that the most common bias that has been faced is saying women are not good in technical fields and are not capable for doing difficult things, and it should be left to men. And I think, which is very true, technical fields and financial fields and decision makings and so on have been treated to be typically male bastions, and women have not been taught to be good enough there. But I think what bigger statement, or what bolder statement to break that bias, is the fact that I am speaking on, Institute of Technology or an engineering platform where there are so many women. And I think you can give yourself a big round of applause there, and take a bow and move forward. But I think you very successfully quelled that. Yes, so true that. And I think any other thoughts or any other biases that you feel you have heard, encountered, passed on, if I may, because that's what I'm going to come to next, is how what is our role as women. So, one thing I want to say, Simran in her introduction said that women have suffered misery because of men for a long time. And I'd really urge all of us to take a look at our own participation and our own contribution and role in the society, whether positive or negative, so that we also understand the power to course correct and make an impact. Society is not just by men. Patriarchy has an equal women in perpetuation or in breaking out of. For a long time, feminism has been looked at as anti-men.
And if we have those conversations, we perpetuate that myth. So it's important for us, Simran, also to understand that, yes, we are not suffering only because of men, or we have not suffered because of only men, but because of the mindsets that got, the biases that got ingrained and perpetuated. Women are stakeholders in that. So if anyone would like to take a go at how women can break the biases, how you have, anyone wants to share their story of if they had to break a bias or barrier to get into the technology field and get ahead here to where the positions that you are in. Anybody would like to? Let's celebrate you and your story before I go ahead and share something more. Because it's all about celebrating you uniquely. So it's lovely to share, each other's stories as well, and know the heroes and sheroes, in fact, amongst ourselves. Anybody would like to take a go at it, or shall I then go ahead? I'd love to hear some stories from you all and be inspired. Anybody? Shall I go ahead then? Hi, Would Deepa. anyone? Hi, Shalini. We'll be interested in listening your stories because we have a very short time crunch is also there. So please go ahead. All right, wonderful. So the idea that I'd like to put across is that there are women in today that are going ahead, and I'd like to share my own story briefly with you all, and say that you can make your choices and not be bound down. And before I do that, I'd like to sort of give you a broader perspective into saying how biases manifest themselves. Biases manifest themselves in manners that are very subtle and very invisible, and we tend to not recognize them. So I'd like to place some on the record for you. And also biases are not impacting women alone. Biases hold men back as well in being allies for women. So it's important to recognize both. And, I'd like to also place with you the fact that your role to break the bias. May I request Asavri to mute herself? I don't know, she looks muted, but there is some background noise. In any case, so your role also in saying you are also responsible and stakeholder in making sure that you do not perpetuate those biases to the next generation. You do not, both men, boys and girls, you do not, Madeleine Albright got criticized immensely when she says there is a special place reserved in hell for the women who don't stand up for each other. While it was very controversial, I think it's also important for us women to be each other's allies and, support each other and not hold them back. Is also see allies in men. Some of the biases that I want to, make you conscious of that we end up propagating is that if a woman is comfortable, settling down with family responsibility, it shouldn't be important for her to prove her worth by, going out there and fitting into the stereotypical aspiration of what being empowered means. That is also important because we have to make life choices and they should be our own, not governed by anything. One thing is, do not give compliments to women or in a manner that they seem like you're comparing them to men. Shift the benchmark of achievement or sense of empowerment from men to women. And this I'm saying doing deliberately from men to women is because we have to stop seeing them like this. There has to be, this transit has to be at an equal level and not like this. At the same time, it's important to understand that we have to feel free. Bias is not an abstract concept. Bias has no power in itself to survive till it gets a body to
live in. Please make sure that you do not give any bias any place to survive within yourself. Please do not let any bias survive. Some of those have been in us while growing up, but we need to break those and move on. And I'll share my story with you. And it's almost like bearing my heart. So I come from a family which is very traditional, and I've been born and brought up in a very, very traditional state called Rajasthan, where values, I'd not call it orthodox, but patriarchy is as manifest as it can be. I'm the third of three daughters born to in a family, and I was not celebrated by the families at large. It almost meant doom, because I was the third daughter, and the last hope of having a son was or a male, hair was broken with my birth. So I give it to my parents that they held their ground, and I think they used that possibly that setback, so to say, societally put on them, and turned it around. And they said, and here is what I mean when I say, don't compare your daughters to your sons. Just make them good enough daughters. My parents thought we will bring her up better than anyone brings their son. They exposed me to horse riding, rifle shooting, mountaineering, bike riding, anything. And I was permitted to choose a career of my choice. And when Simran was reading my profile, I'm not sure how many of you observed that, but my academic course has been very checkered, and I was permitted to explore and find my calling and continue to do what I wanted to do. In all of this, my parents did have a lot of struggle at the hands of the community that we lived in, and they fought it fiercely. But the one thing that they managed to do was make me an empowered human being, where I could make my own choices. And here is the second part of my journey, which I also want to put across, is that I got married and I have two daughters of my own. And there was a choice where I had to take a career break because of my daughters being in my life and me having to give them my time and attention. It was a real dilemma. I was slipping into depression because I was having to let go of my career and my empowered life. But the one thing that let me sail through was that it was not put on me by anyone, that decision. It was my own decision. And that was hugely empowering. That was something that let me sail. And today I look back and I feel content and satisfied for the fact that I was empowered enough to take control of my life and my decisions, and not be stereotyped by saying, if I let go of my career, I am a poor woman who had to give up her career. If I had continued to do that, there was nobody to tell me that, oh, what a career-oriented woman. She left her kids and went on for her job. It was a choice I could make, a decision I could make, and live by it. And today I run a successful business. I have a very good turnover, and that gap has not led me to be left behind in life. That's my journey. And if I have to debrief it, or if I have to say what are the takeaways that I have from this today, is that at every step of the way, it was important to feel empowered and not let any bias get embodied in me. To be very mindful that biases are only abstract and they will only bear upon me or have any negative bearing on me if I let it make me feel disempowered. So that is as far as what is the role of a bias or an individual woman or person to sort of break free of the biases. But I also have to bring to fore that in a society, we live in an environment where we are also not in isolation. So
we have to be faced with a lot of biases that are manifest in the society. And to that effect, I think it is important for us to realize that there is absolutely no control, um, no control on other people's mindsets, but it is very important to make a difference. And the only way you can do it is to continue to walk the walk, to continue to go ahead, to continue to be successful, and consciously have a dialogue around this all around you, not just in a family space, but in your peer groups and wherever. And the kind of biases or stereotypes that seem like microaggressions. And one more thing I want to put across is the biggest bias I'm seeing today is where a strong woman is seen as an aggressive woman or as a person who's a troublemaker. And sometimes also we women, take a lot of, I should say, we tolerate a lot of microaggressions done towards us in our work spheres or life, just to prove that we can take it on our chin and to say, well, if anyone can, why can't I? And my point is, we have to be allies for each other and call out any microaggression, any act of inequality or any act of manifestation of bias towards us, directed towards us, because while we may be able to take it, there may be so many women around us who are still at the start of their journey, and they may feel like they cannot fight against that bias and give up. So just to create an environment that doesn't let any biases perpetuate, we have to be allies, we have to be champions, we have to be the voices to call out and make sure that those biases don't stand ground, that those microaggressions, that those acts that put us down are not given any kind of validation, and they are put away. I also want to say here, it's very important for us to not limit at celebrating this one day and talking about it on one day of what we stand for, what is the power that is manifested in us, and what collectively we can achieve. It is important to be aware of the rights and entitlements that we have. It is hugely empowering. It is important to be aware and mindful of the remedies and recourses we have if any such violations or inequalities are extended our way. It is very important to know that there is a system that stands by you. There is a whole tribe and community that stands by us when we are making these small steps towards a world that is more equal, more free of bias, and creates a climate that is enabling and that is not disempowering. I'd again like to have some conversation and some comments from you, and I'd like to have some experiences from any of you who'd like to share their journey on how they have broken a bias. Before I do that, I'd like to, I like poetry, and I'd like to share a very couplet that in fact, in a sense, embodies breaking the bias or not being held by any kind of, I would say, a stereotype or a glass ceiling or a line that's drawn for us. That couplet is from by Allama Iqbal, a very popular poet, and that says, "खिरदमंदों से क्यों पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहती हूँ, मेरी इंतहा क्या है." And I'd like to translate it for you. Khirdmand means people who are the wise, who are the people who set the tone and the conversations of the world and the society. And to say that I don't want to know from them, where is my limit, where do I have to start, where is it that my line is drawn. I am more concerned about defining for myself, where is my limit, where all can I go, what all can I scale.
So I'd like you all to define your own peak to find in yourself today and every day, where you feel is your height of where you feel empowered and enlightened, and like you have arrived in life, you've done with yourself what you wanted to, and let nobody hold you back. Nobody. And I'd like to hear from some of you if I have managed to, sort of open up enough myself and hear your stories. The title I said is not my story, it's our story. So if any one of you would like to share something, it will be wonderful. If not, then I can go ahead and share some, interesting aspects beyond this. So I'd like to turn it back to any of you who would like to share anything. If you feel encouraged enough to talk about your life journey, or anything that you've observed around you that you'd like to bring forth here. Would anyone like to share anything? All right, interesting. Then I'm going to put forth a few of the biases that are commonly prevalent, and you make an assessment in your heart if you have ever done this yourself or heard this around you, and not reacted. First up, women gossip, men don't. Second up, as someone said, women are not good in technical things. They are more good in creative things, arts, and so on. Another one is women are bad drivers. Another one is women cannot keep a secret. Another one is women are more concerned about their looks. So these are just some of the women are jealous people. They are jealous of each other. So these are some of the stereotypes which lead to some biases that manifest professionally also. And we see the manifestations in disparity in income. We see manifestations in hiring. We see manifestations of it in promotions. We see manifestations of it in how we are able to assert ourselves, how many women we see in senior boardrooms, and so on. Beyond that, some stereotypes at home. If you are career oriented, then you are not concerned about your family. That's a bias. If you are pro family, that you are not ambitious enough. If you are just married, you would possibly not be focused at your work. If you've had children, your responsibilities have shifted. If if you are not doing the household work, you're a homebreaker. So all of these are, and there are similar stereotypes for men, or biases for men. If they support their wife, they're henpecked. If they support in housework, they're not men enough. If they are looking after their children, they're spoiling the next generation by being a bad role model, and so on. And you can check if any of you have heard or experienced that, and how did you react to this? And did you actively be a champion in breaking that and not feeling guilty at times for doing what you wanted to do? And it's important to break free of the guilt as well, because that is at the core, then not letting that bias harbor and perpetuate or harm you in any way. Other societal manifestations of gender biases or stereotypes, and I'm going to ask you a small quiz, which I'm sure, or a riddle, which you have heard yourself so many times, I think, is when a man and his son were driving on the road in a car and met with a massive accident, and the man died on the spot, and his son was rushed to the hospital. And when he was wheeled into the operation theater, the surgeon said, "I cannot, my son." And when this question is asked often,
People take time to think what could have gone wrong. And, the kind of answers you get um, make you conscious of the fact that it doesn't come naturally to us or instantaneously to us that the mother is the surgeon. Because we have an ingrained bias or stereotype in our head that, if it's a doctor, then it must have been a male surgeon. And we are thinking of all possible theories, but not come to the direct conclusion that this could have been a woman. In fact, of course, that changes now. I was speaking to my daughter about this, and she turned around and said, maybe this guy has two dads, maybe this is the stepdad or something. But the point is that it doesn't come naturally to say this could be the woman. And we all have the role stereotypes and so on, which we can break and be the champions and be very empowered. I'd like to turn it around, and I'd like to actually have some conversation from you all, and not make it a conversation, not have it as a conversation, but as a speech. To anybody, I'd urge to share, maybe the principal ma'am or Shalu for that matter, or anyone else who'd like to open up and share how their journey has been, and be the role model within the institution for the others and share their journey. All right, interesting. Let me ask if you know of your rights as working women. Let's see how empowered do we feel. You can do a show of hands. How many of you know what are your rights and entitlements as working women in the workspace? Let's do a quiz. How many of you know what are your rights and entitlements as working women that are provisioned and absolutely guaranteed to you? Any show of hands to let us know how many of you know what are your, in your reaction, and in the bar below on the Zoom, you have a reaction icon. You can click on the hand. How many of you know what are your rights and entitlements as women, working women? I don't see a single hand up, please. Is it because you're not raising it, or is it because none of you actually know? Well, if it is because none of you are aware, then I think yes. All right, great, thank you. I see two hands up. So my parting notes would be that let's move beyond being trapped in tokenism and jingoism and celebrating one day and feeling special on that one day. In fact, in 29 countries in the world, Women's Day is a holiday. So beyond tokenism and jingoism, let's know what our rights are. Let's know what our entitlements are. Let's calling out what we demand, what we are entitled to do, to get. Stand up for anything that comes in your way, in your growth, in your journey, in making you take your decisions, that comes in the way of exploiting your own complete potential in an environment that is conducive and enabling. And please embark on that journey with utmost courage, treating each day as Women's Day, each day as your day. And it is important to do that. Please make sure that you have these conversations, in your families, around in your circles, and build that narrative, not just on one day, till that point that it becomes a norm, till the point that we don't need a Women's Day. We become equals in the society, and we do not need to be put in a box where schemes and programs are made for us as women.
we can embark on our journeys independently. To make programs for women is laughable, if you ask me, because I'm a woman very different from a woman who's sitting in a village, from a woman who's possibly in a tier two city, who's not even gotten an opportunity to get education. So my journey is very different from theirs. My requirements for support are very different. It's important for us to walk that walk every day and break that being boxed into one group or band as a target group. Let's 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 carve that position for ourselves. Yes, very. I'm glad someone pointed out the laws against sexual harassment. True, that is one of the entitlements, and I'm sure ever take any any deviation, any unwanted, unwelcome behavior directed towards you that is amounting to sexual harassment or any kind of harassment in any manner, and call it out and stop it, because there are laws to protect you from any of that. There are multiple laws in the society and in the workplace, and multiple programs. And there is one champion that you have, one ally that you have on all times, and that is you yourself. And it's important to identify that and keep making a difference, keep making a change. And that is what I'd like to leave you with. And I'm really sorry if I gave a monologue that sounded like a speech that you had to endure, but I wanted to share this experience and this journey, and put this across without much of data and much of PowerPoint, and not make it sound like a session, but a conversation that another fellow woman is having with you, and sharing her experiences. It is. I wanted it to be relatable, and I hope any of you can relate with that, and keep the one message with you, that let no one define your life choices. Let no one define what being empowered means to you. Being empowered means not letting any bias harvest in you, live in you, hold you back. Being empowered means taking your decisions without the fear of how others will look at it, or how others define empowerment. Be responsible for yourself and let nothing come in the way. And make sure that you are able to be an ally for anyone who needs support. So that is what I'd like to leave you with. And thank you for your time. And any comments are welcome. Anybody who'd like to know more about laws, about women, whether at workplace or otherwise, and if you'd like to have more information, you can reach out to me, and I'd be happy to respond to you. You must be aware of what you are entitled to. All right. Thank you very much. Any questions, any comments are very welcome. Hello. Yeah. Hi, Dr. Deepa. It was my pleasure to invite you on the Vivekanand platform, and hope to have many more sessions where we meet personally and in the campus, not in the online. And I'm sorry not to open up about the story part, because I felt that the time was too short, and wanted to listen you more and more. So thank you so much. Thank you so much, Shalu, for having me. Yeah, thank you so much for having me over, Shalu, and it's a pleasure. I wish I could have more interaction, and I'd take your offer on coming on campus and just talking to all your lovely, strong colleagues and talk to them, and it will be my pleasure. Thank you so much. Thank you very much, and cheers to each one of you every day of our life. Yeah. Thank you. Thank you so much, ma'am, for sharing your inspiring story. We all related to it, almost every part of it. Facing the stereotypes and biases have been such an usual thing that we forgot that it's wrong. But we have to overcome from it and not let any bias to get embodied in us.
Now, I will invite our another guest, Ms. Shraddha Shinde. She has been working with We Care Sanitary Napkins since 3 years as a star executive. She has helped across 12,000 ladies with the product. And now she will enlighten us on this very big and very common issue which all of us women face. Ma'am, please. Uh, Is there any problem with the voice? till the time the speaker will Ma'am, come. Shraddha ma'am is not in the meeting. Yes, ma'am. Sangeeta? Yes, madam. Hello. Yeah, she hasn't joined. Hello. हाँ Madam speaker Sangeeta. hasn't joined. Yeah, Sangeeta, speaker join नहीं किया क्या? एक बार फोन करो उनको. हाँ मैं चेक करती हूँ. हाँ हाँ. Okay. Till then the speaker is coming, let's conduct our next event, which is a quiz. I'm sharing the link in the chat box and I will also share the QR code which you can access. Please feel free to contact us if you face any difficulties. हेलो. हेलो रजनी मैडम. हाँ संगीता. हाँ मैडम वो श्रद्धा मैडम ज्वाइन कर रही है. बस अभी इन फ्यू मिनट्स में ज्वाइन करेंगे. कुछ तो उनके अच्छा ठीक है, यहाँ तब तक अपना क्विज खत्म कर देते हैं हम लोग. ठीक है. हाँ ठीक है. ओके. हाँ. हेलो. ओके ओके. Yeah, continue with the quiz. हेलो. Yes. आपको क्या आवाज आ रहा है? श्रद्धा बात कर रही हूँ. हेलो. Yes, Shraddha ma'am, we can hear you. हाँ ओके. Welcome, ma'am. I will introduce you to everyone again. Now I will invite our another guest, Ms. Shraddha Shinde. She has been working with We Care Sanitary Napkins since 3 years as a star executive. She has helped across 12,000 ladies with the product.
and now she will enlighten us on how this big and very common issue which all our women face. Ma'am, please. ओके, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे सोनाली रहाटे मैम ने इनवाइट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ सोनाली रहाटे मैम को। थैंक यू मैम। और आज का ये जो सेशन है, अपने पास टाइम थोड़ा कम है, 1 आवर का ही टाइम है एक्चुअली। ये सेशन 2 to 2.5 आवर्स तक चलता है, पर मैं आज आपको थोड़े ही टाइम में आपको ये सारा इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो ये कैसे है ना कि आजकल हम लोग को पीरियड्स रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, करेक्ट? पीरियड्स के जो प्रॉब्लम्स है, हेलो आवाज आ रहा है ना? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि आवाज आ रहा है। क्लियर है Yes, ना? ma'am. हाँ, ओके। हाँ, तो एक्चुअल कैसे है कि पीरियड्स के जो प्रॉब्लम्स है वो आजकल इतने बढ़ रहे हैं कि आपको पेट दुखने वाला जो प्रॉब्लम है वो बोलो, अदरवाइज बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा, पीसीओडी के जो प्रॉब्लम्स आजकल बढ़ रहे हैं, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? आप लोगों ने कभी सोचा है क्या कि ये पीरियड्स के जो प्रॉब्लम्स है ये हमें आजकल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग अगर अपनी दादी को या परदादी को अगर ऐसे पूछे कि पीरियड्स के प्रॉब्लम उनको थे क्या, यही आएगा कि पीरियड्स के प्रॉब्लम नहीं थे। हेलो। हाँ, तो ये जो पीरियड्स के जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आजकल हम लोग की जो खाने की आदतें बदल रही है, हम लोग ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, इसके वजह से हम लोग को पीरियड्स के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। पर अगर हम लोग देखा जाए ना, तो आजकल की जो आदत है हम लोग नहीं बदल सकते, पर हेलो, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है। हेलो। हाँ, Yes, ma'am, we can hear you. हाँ, तो आजकल ये जो आदतें हमारी बदली हुई आदतें है, उसके वजह से हम लोग को ये सारे पीरियड्स के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अभी आपको पता है क्या, आप लोग जो कोई पैड्स यूज कर रहे हो वो किस तरह से बनता है, या पैड्स कैसे बनता है, इसके बारे में आपको कुछ पता है? कोई बता सकता है माइक ऑन करके प्लीज, कि पैड्स कैसे बनते हैं? कुछ पता है क्या किसी को? हेलो, प्लीज आप लोग बोलिए तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग को आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है। हेलो। मैम आवाज आ रहा है। हाँ, नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि जो पैड्स बनते हैं ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी है क्या किसी को? ओके, मैम ठीक लार्ज स्केल में नहीं पता मैम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक्चुअल कैसे ना, ये जो पैड्स है ये पूरी तरह से डी कैटेगरी के प्रोडक्ट से बनते हैं। अभी डी कैटेगरी का प्रोडक्ट मतलब क्या? अभी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हम लोग अगर देखा जाए तो बड़े बड़े गद्दे होते हैं, इवन कुशन्स होते हैं, इसके जो अंदर जो यूज किया हुआ कॉटन है, वो कॉटन इवन
कंपनीज में जो कार्टन्स यूज किए जाते हैं, ये कार्टन्स टेलरिंग के वक्त जो बची हुई चिंदी होती है, वो चिंदी, ये सारा मटेरियल इकट्ठा किया जाता है। ये मटेरियल इकट्ठा करने के बाद इसके ऊपर उसका एक लगदा बनाया जाता है, और ये लगदे के ऊपर फर्स्ट जो हम लोग ब्लीच है, ब्लीच आपको सबको पता होगा कि ब्लीच जो व्हाइट कपड़ों के लिए यूज किया जाता है, ये ब्लीच पूरी तरह वो मटेरियल पे डाला जाता है, और उसके बाद ब्लीच डालने के बाद उसके ऊपर क्लोरीन, क्लोरीन और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डेंजरस ऐसे केमिकल डाला जाता है, उसका नाम है डायोक्सिन, DIOXI, डायोक्सिन। मैं एक्चुअल जानबूझ के स्पेलिंग बता रही हूँ क्योंकि आप लोग इसका रिसर्च कर सकते हो गूगल पे कि डायोक्सिन कितना खतरनाक होता है। एक्चुअली ये डायोक्सिन जो है वो हर एक पैड के पीछे अपने बॉडी के अंदर 0.05% कैंसर इंसर्ट करता है। अभी सोचो कि 0.05% मतलब कितना ज्यादा हम लोग के बॉडी के अंदर कैंसर जा रहा होगा, क्योंकि हर एक लेडीज जो पीरियड्स आने के बाद एक कालावधि होता है, जब मतलब एक 40 एज तक लेडीज को पीरियड्स आते हैं, तो उतने पीरियड्स, उतने जो कालावधि है, उस कालावधि में एक्चुअल वो लेडीज को 17,000 के अबाव पैड्स लगते हैं। अभी सोचो कि हर एक पैड के पीछे 0.05% अगर कैंसर इंसर्ट हो रहा है, तो 17,000 अगर हम लोग पैड यूज करें तो हम लोग के बॉडी के अंदर, हम लोग की बच्चादानी के अंदर कितने सारे मतलब परसेंटेज में कैंसर इंसर्ट होता रहेगा। तो अभी ये जो कैंसर है, ये आपको अभी यहाँ पे सारी लेडीज है, मैं एकदम फ्रैंकली बोल सकती हूँ, अगर हम लोग वॉशरूम में जब पीरियड्स के वक्त जाते हैं तभी अपने पैड पे ब्लड क्लॉट्स गिरे होते हैं, कभी कभी होगा कि ब्लड क्लॉट्स होते हैं। अब ये ब्लड क्लॉट्स क्या होते हैं, तो ये जो ब्लड क्लॉट्स है, ये आफ्टर थोड़ी देर के बाद हम लोग वापस वॉशरूम में जाते हैं तो वो ब्लड क्लॉट्स पैड्स पे नहीं होते, तो ये ब्लड क्लॉट कहाँ जाते हैं? एक्चुअल पैड पूरी तरह से प्लास्टिक से बनाया गया होता है, और ये प्लास्टिक आपको लगता है कि नॉर्मल ब्लड सोक नहीं होता है, तो ये ब्लड क्लॉट्स थोड़ी सोक होने वाला है। तो अभी ये जो पैड्स है, ये जो ब्लड क्लॉट्स है, ये ब्लड क्लॉट्स रिवर्स अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट होते हैं, क्योंकि अपनी जो थैली है, मतलब बच्चादानी है, उसका मुंह ओपन होता है, तो उसके वजह से वो रिटर्न अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाता है। और जब ये इंसर्ट होता है तो अपने बॉडी के अंदर, मतलब अपने बच्चादानी के अंदर एक लेयर बन जाता है, और ये लेयर जो होता है, उसी लेयर लास्ट में जाके कैंसर तक हम लोग को पहुंचाता है, क्योंकि ये जो लेयर है, ये लेयर स्लोली स्लोली इंसर्ट होते होते इसको एक गांठ जो होती है वो बन जाती है, और उसके वजह से अपने को कैंसर होता है, और इसी कैंसर को बोला जाता है सर्वाइकल कैंसर। अभी ये सर्वाइकल कैंसर आजकल पीसीओडी के प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। पीसीओडी के 3 प्रकार होते हैं, एक सबसे ज्यादा ब्लीडिंग जाना, सेकंड बहुत गैप होके ब्लीडिंग जाना, और एक होता है 15 डेज में ब्लीडिंग जाना। अभी ये जो पीसीओडी का प्रॉब्लम है, इसका मेन एक्चुअल रीजन ये होता है कि ज्यादा फास्ट फूड खाना फर्स्ट। अभी देखा जाए तो ये जो पीसीओडी का प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होने के लिए ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे ये सॉल्व हो जाए, पर हाँ बहुत ऐसे बहुत बड़े ऐसे डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स हम लोग को एक वेल ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये वेल ट्रीटमेंट की वजह से अगर बहुत कम लेडीज है उनका पीसीओडी का प्रॉब्लम कम हो जाता है, पर अदरवाइज कोई कोई डॉक्टर गोलियां होती है वो लेडीज को देखे उनका पीसीओडी कंट्रोल में करने का काम करते हैं। पर आप सोचो कि ये जो गर्भ निरोधक गोली होती है वो कितनी डेंजरस होती है। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनके लिए वो तो सबसे ज्यादा डेंजरस ऐसी वो गोली होती है। तो ये ऐसी गोलियां खा के अगर पीसीओडी कम हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है, और अगर वो गोलियां वापस बंद कर दे तो वो पीसीओडी वापस कंटिन्यू वैसे ही रह जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग के ये जो पैड्स है इसके वजह से। ये जो पैड्स है ये पूरी तरह प्लास्टिक्स रिलेटेड पैड्स होते हैं, प्लास्टिक्स के बने हुए पैड होते हैं। विस्पर बोलो, स्टेफ्री, सोफी, जो भी पैड्स जो मार्केट में जो भी पैड्स मिल रहे हैं वो सारे पूरी तरह से प्लास्टिक से बने होते हैं। आप खुद देख सकते हो, आप लोग जो भी कोई पैड्स यूज कर रहे हो, मोस्ट ऑफली लेडीज विस्पर पैड यूज करती है क्योंकि इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बोला जाता है।
एक्चुअल देखा जाए तो नंबर 1 ब्रांड क्यों होता है पता है? मैं खुद एक एड एजेंसी में भी वर्किंग कर रही हूँ। ये मेरा साइड काम है जो मैं सोशल वर्किंग के हिसाब से करती हूँ। पर मैं एड एजेंसी में वर्किंग करती हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारी एड्स दिमाग पे एक हैमरिंग करने का काम करती है, बराबर। अभी अगर हम लोग आप लोग खुद ही सोचो कि जब हम लोग टीवी देखते हैं तो विस्पर की सबसे ज्यादा एड्स आती है, सेकंड एड आती है वो स्टेफ्री की आती है। परसेंटेज वाइज 90% एड विस्पर की होती है, पैड्स के एड में बोल रही हूँ। और 70 to 80% एड होती है वो स्टेफ्री की होती है, और सबसे कम एड होती है वो सोफी की होती है, करेक्ट। इसलिए क्या होता है कि जो एड हम हमारे दिमाग पे जो हैमर करने का काम करती है, तो ये हैमरिंग में विस्पर की एड हम लोग को ज्यादा हैमर करती है, इसलिए इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बोला जाता है और ज्यादा है जो विस्पर है। विस्पर की क्वांटिटी कभी कम कभी ज्यादा करके वो लोग प्राइसिंग में ऊपर नीचे करते हैं, पर उनकी जो क्वालिटी है सारे पैड्स की, विस्पर, स्टेफरी, सोफी, कोई भी पैड लो, इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी खराब है, ये हम लोग को पता भी नहीं होता है। और हम लोग की ये जो भागम दौड़ वाली लाइफ है, इस लाइफ में हम लोग को खुद पे ध्यान देने के लिए तो थोड़ा भी टाइम नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके ऊपर हम लोग ये पैड्स कैसे बनते हैं ये कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको जब पूछा सब लोगों को कि पैड्स कैसे बनते तो आप लोगों ने किसी ने भी आंसर नहीं दिया। इसका मतलब यही होता है कि हम लोग के पास टाइम ही नहीं है कि हम लोग क्या खुद के लिए यूज कर रहे हैं। और इतने सेंसिटिव पार्ट के लिए हम लोग जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, नॉर्मली हम लोग एक सब्जी भी लेने जाते हैं ना मार्केट में, तो ऊपर उल्टा फुल्टा करके उसको चेक करते हैं कि वो सब्जी खराब नहीं है ना, या क्यों करते हैं, क्योंकि वो पूरी हम लोग को फैमिली को देनी होती है खाने के लिए। पर यहाँ पे कैसे है ना कि ये जो प्रोडक्ट है ये हम खुद के लिए यूज करने वाले हैं, और हम लोग को खुद खुद के लिए टाइम ही नहीं है, इसलिए हम लोग वो प्रोडक्ट, कभी भी आपने कभी देखा है कि प्रोडक्ट पे कभी एक्सपायरी डेट होता है या नहीं होता है? विस्पर वाले प्रोडक्ट में मैंने आज अभी तक 1200 के ऊपर लेडीज को जाके ये प्रोडक्ट दिया है। मुझे पता है कि बहुत सारी लेडीज ने मुझे बताया गया है कि मैडम अगर ये ज्यादा दिन रखते हैं ना तो इसके अंदर कीड़े बन जाते हैं पैड के अंदर। सोचो तो ये कैसे और कितने डी कैटेगरी के प्रोडक्ट से बनाए गए रहेंगे। वो वाइट दिख रहे हैं पैड्स, पर उसके अंदर कोई भी एंटीबैक्टीरियल ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से ये पैड ज्यादा दिन तक बचे या ज्यादा दिन तक टिके। इसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। हम लोग कोई कोई लेडीज तो स्टॉक लेके आती है, मतलब एक एग्जांपल ही बता रही हूँ। पवई में मैंने एक, वहां पे एक्चुअल एक लेडीज ने मुझे बताया कि मैडम आप बोल रहे हो ना डी कैटेगरी से बने हुए रहते हैं। मैं बोली हाँ, तो ये रियल है। मैं बोली क्यों, आपको क्या एक्सपीरियंस है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक्चुअल मतलब मैंने डीमार्ट से, आजकल हम लोग को भी पता है कि डीमार्ट में थोड़ा डिस्काउंट्स होता है तो हम लोग स्टॉक में ही लेके आ जाते हैं प्रोडक्ट। तो उस वो लेडीज ने भी वैसे ही किया था, स्टॉक में लेके आई थी 2-3 महीने का स्टॉक, और उसके बाद उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो स्टॉक उसका वैसे ही बच गया। अभी आफ्टर 10 मंथ उसने जब यूज करने के लिए स्टार्ट किया वो प्रोडक्ट, जब लकीली उसने देखा, उस मतलब लकीली उसको दिखाई दिया कि उसके अंदर मतलब वो जो कीड़े होते हैं वो हुए थे, और उससे जब वो फाड़ के देखा तो अंदर लिटरली छोटे छोटे व्हाइट कीड़े हो गए थे। तो सोचो कि ये डी कैटेगरी का प्रोडक्ट अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर वो उस वक्त अभी जब बच्चा होने के बाद तो थैली का मुंह पूरी तरह ओपन होता है, अभी उस वक्त अगर ये लेडीज ने न देखे ऐसे ही यूज किया होता तो उसके यूट्रस के अंदर ये कीड़े नहीं जाते। सोचने वाली बात है। और जब उसने डीमार्ट में कंप्लेंट की तो उसको यही बताया गया, मैम आपने इतने महीने तक क्यों रखा, यूज ही नहीं करना चाहिए था, फेंक देना चाहिए था। पर अभी उससे स्टॉक लाते तो ऑब्वियसली वो पूरा पैक बंद स्टॉक है तो वो यूज करने ही वाली थी ना। तो ये है सारी चीजें कि ये इस तरह से बनाया जाता है डी कैटेगरी से। अभी मैं आपको जो डेमो दिखाऊंगी, आपको विनश्री करके एक नाम से रहेगा, वहां पे आप वीडियो देखिएगा। मैं आपको डेमो दिखाने वाली हूँ कि एक्चुअल ये पार्ट्स डी कैटेगरी से बनते हैं या नहीं। इसके बारे में ये वीडियो है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मला नको दाखवू. तुम्ही बंद केलं.
विनयश्री करके एक मैम है, उनका आप वीडियो ऑन कर सकते हो प्लीज? हेलो मैम, प्लीज विनयश्री करके एक नाम से ज्वाइन हुए हैं, उनका आप वीडियो ऑन करिए एक बार। गूगल ट्रांसलेट ऑप्शन है ना, ट्रांसलेट करता है ना। शांता मैम, Kushi, start the video of Vinashri, madam. सबको मिला है ना? I think she can start the video herself, Shraddha madam. ओके ओके Yeah. हाँ झालं चालू करू. सबको दिख रहा है वीडियो? हेलो, सबको वीडियो दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है. हाँ. Yes, ma'am. थोड़े पुढे. इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बोला जाता है विस्पर, और इसके अंदर लिखा होता है कि लिक्विड लॉक मैजिक जेल. ओके, इस तरह थोड़ा सा है. एक मिनट, मैं थोड़ा सेट करती हूँ कैमरा. बस. अगर हमारा ये डेमो अगर सामने सामने होता तो मैं आप लोगों को लेके, इसका जो स्मेल है ना, ये परफ्यूम स्मेल इसको आता है. इसका क्या रीजन होता है ना, मैं आपको बताऊंगी. मैं यहाँ पे कर रही हूँ. ये है वी केयर, जो पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया पैड. इसमें 7 लेयर्स. मैं इसमें से एक पैड ले रही हूँ. इसका जो पैकिंग है ये भी पूरी तरह से कॉटन पैकिंग होता है. स्टेरिलाइट कॉटन बोला जाता है इसको. ये अपना पैड है. मेरा आवाज आ रहा है ना सबको, और वीडियो क्लियर है? Yes, yes. हाँ. ये है विस्पर और ये है वी केयर. अभी विस्पर में जो होता है वो 1 लॉक होता है. कोई भी पैड्स लोगे ना तो उसको एक 1 सिंगल लॉक ही होता है, एक ही. पर वी केयर में 2 लॉक्स होते हैं. एक मिडल में होता है और एक बैक में. एक मिडल और एक बैक में. अगर हम लोग अभी सामने सामने होते तो आप, अदरवाइज आप लोग आपके घर पे या आपके पास जो भी पैड्स है वो आप ये करके देख सकते हो कि ये जो पैड है ये
पूरी तरह प्लास्टिक है, ठीक है। और ये जो अपना वी केयर का पैड है ये पूरी तरह कॉटन पैड है, फुल सॉफ्ट ऐसे ये पैड है। अभी मैं इस दोनों के ऊपर 50-50 ml पानी डाल के दिखाऊंगी आपको, उससे आपको पता चलेगा कि इनकी सोकिंग पावर क्या होती है। ये 50 ml में पानी ले रही हूँ। ठीक है, और 50 ml ले रही हूँ। ये मैंने 50 ml लिया, 50 ml लिया। ये मैं वी केयर पे डाल रही हूँ। एक्चुअल 50 ml क्यों लिया मैंने, क्योंकि अपनी जो नॉर्मल लेडीज जो होती है वो नॉर्मल लेडीज का जो ब्लीडिंग जाता है वो 40 to 50 ml जाता है। जब ज्यादा ब्लीडिंग बोलते हैं ना फर्स्ट और सेकेंड डे में, जब ज्यादा ब्लीडिंग जाता है वो 40 to 50 ml तक ही ब्लीडिंग जाता है। इसलिए मैंने जानबूझ के दोनों पे 50-50 ml यहाँ पे पानी डाल के दिखाया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये विस्पर पानी गिर रहा है, दिख रहा है आपको, पूरा पानी गिर रहा है। और ये वीक है, इसमें से एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा है। ये मेरे हाथ पूरे के पूरे ड्राई है, ये पैड पूरे के पूरा ड्राई है। क्यों ड्राई है ये हम लोग दिखाऊंगी मैं अभी आपको। एक्चुअल क्या है कि ये विस्पर जो है ये पानी सोक नहीं कर रहा है, मतलब ये ब्लड भी सोक नहीं करता है, क्योंकि ये पैड पूरी तरह से प्लास्टिक से बनाया गया है। प्लास्टिक नॉर्मली हम लोग की एक उंगली भी कटती है तो हम लोग वहाँ पे प्लास्टिक रैप नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पे हम लोग को पता होता है कि वहां पे हम लोग को इन्फेक्शन होने वाला है। इसलिए नॉर्मल हम लोग बैंडेड कॉटन वाली जो चीजें होती है या घर में नॉर्मल चिंदी भी हम लोग वहां पे रैप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि कॉटन से इन्फेक्शन नहीं होने वाला है। तो ये विस्पर इतने सेंसिटिव पार्ट में हम लोग जब यूज करते हैं तो सोचो कि हम लोग को कितना इन्फेक्शन होता होगा। अभी मैं ये दोनों पार्ट फाड़ के आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर एक्चुअल क्या होता है। फर्स्ट मैं विस्पर को फाड़ रही हूँ। विस्पर में बोला जाता है कि लिक्विड लॉक मैजिक जेल, विस्पर पे लिखा होता है कि लिक्विड लॉक मैजिक जेल। एक्चुअली इसमें लिक्विड लॉक मैजिक जेल है क्या ये मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर आप खुद भी घर पे एक बार ट्राई कर सकते हो पैड को फाड़ के, इसके अंदर है लिक्विड लॉक मैजिक, ब्लू कलर की कोई जेल है नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बोलते हैं ना कि हम लोग को उल्लू बनाया जाता है एक तरीके से, क्योंकि इस पे सिर्फ ब्लू कलर का प्रिंट होता है अंदर के साइड पे, जो हम लोग को बताया जाता है लिक्विड लॉक मैजिक जेल करके पैड के अंदर है। ये आपको मैं दिखा सकती हूँ, पूरी तरह प्लास्टिक है। ये मैं खींच रही हूँ, आपको दिख रहा होगा कि ये पूरी तरह प्लास्टिक है। सोचो कि इतने सेंसिटिव पैड में पार्ट पे हम लोग अगर ये प्लास्टिक यूज करेंगे तो अपनी हालत कितनी बेकार होती रहेगी इस वक्त। अभी मैं वी केयर को फाड़ के दिखाऊंगी आपको।
ये फर्स्ट लेयर है पैड का। ये है स्टेरिलाइट कॉटन, पूरी तरह कॉटन है ये। इसके ऊपर आपको दिख रहे होंगे कि छोटे छोटे छेद है। इसकी वजह से जो ब्लड क्लॉट्स गिरता है ये पूरी तरह से सोख हो जाता है। ये मैं अगर ऐसे फाड़ती हूँ तो ये फट रहा है, ये पूरी तरह कॉटन है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऐसे एक स्ट्रिप होती है, इसे इसे बोला जाता है एंटीबैक्टीरियल स्ट्रिप। इसे एनियन स्ट्रिप ऐसे भी बोला जाता है। ये स्ट्रिप बैक्टीरिया क्रिएट नहीं होने देता है। एक्चुअल जब पैड पे एक बूंद भी ब्लड गिरता है ना, और हम लोग अगर ये पैड कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है कि ये पैड पे जो बैक्टीरिया क्रिएट हो रहे हैं वो पूरे बैक्टीरिया अपने बॉडी के अंदर रिवर्स अंदर जा रहे हैं। पर ये एंटीबैक्टीरियल स्ट्रिप वहां पे बैक्टीरिया क्रिएट नहीं होने देती। अभी मैं इसको रोल करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर और 40 ml का डेमो करने वाली हूँ। मैं 2 ग्लास ले रही हूँ, उसमें और 40 ml पानी डालूंगी। ये मैंने 40 ml लिया, 40 ml तो मैं एक ग्लास में डाल दी। और ये एक मैं 40 ml ले रही हूँ, मैं दूसरे ग्लास में डाल दी। Yes. हाँ, ओके, थैंक यू। अभी मैं ये विस्पर में, हाँ पता है कि ये जो ब्लड निकलता है उसको एक अलग से स्मेल आता है, उसके वजह से ये लोग ने परफ्यूम ऐड कर दिया है। पर परफ्यूम अपने बॉडी के लिए कितना अनहेल्दी होता है ये हम सबको पता है। नॉर्मली हम लोग अगर परफ्यूम अपने हाथ पे भी मारते हैं तो वहां पे वो जलन सी होती है थोड़ी देर के लिए, तो सोचो कि होगी या नहीं होगी, खुद सोचिए आप। तो ये जो पैड है ये वो एक्चुअल परफ्यूम यूज करने का मेन रीजन क्या होता है, ये अपने ब्लड का जो स्मेल है वो कम होने के लिए नहीं होता है। एक्चुअल ये यूज किया जाता है, ये जो गम होता है, ये जो गूंद होता है, ये गूंद होता है, ये इंडस्ट्रियल गूंद होता है। और ये 4 वॉश में भी है ना, अपने कपड़ों पे से, मतलब जो पैंटीज हम लोग यूज करते हैं उस पे से नहीं जाता है। इसके वजह से बहुत सारी लेडीज को आफ्टर पीरियड्स भी खुजली होने का, जो इचिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो होता है, क्योंकि ये जो गूंद होता है वो कपड़ों पे से नहीं गया होता है 4 वॉश में भी। और ये है, आपको इसके ऊपर एक छोटे छोटे
Recording in उस वक्त progress. होती है अपनी बॉडी में, ये हीट को स्टेबल करने का काम ये जेली करती है। इसके वजह से हम लोग को ये पैड्स यूज करने के बाद जो पेट दुखने वाला प्रॉब्लम है वो बंद हो जाता है। इवन ये पैड पूरी तरह कॉटन के बनाए गए हैं, इसलिए हम लोग को जो रैशेस होते हैं थाइस पे वो भी नहीं होते हैं। इवन इचिंग का जो प्रॉब्लम होता है आफ्टर पीरियड्स, इचिंग का जो प्रॉब्लम्स होता है वो भी नहीं होता है, क्योंकि इस पे गुण यूज किया गया है। ऐसा ये पैड है पूरी तरह से ऑर्गेनिक। मैं अभी आपको ये पैड्स का जो भी कोई सॉल्यूशंस है, मतलब जो लेडीज को इससे फर्क महसूस हुआ है, इस बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। मैं वीडियो ऑफ करती हूँ। आप लोगों को कैसे लगा वीडियो, आप मुझे बता सकते हो एक बार? हेलो, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू मैम। आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग ने ये पैड्स यूज करना चाहिए या नहीं चाहिए? आपको लगता है कि विस्पर ही यूज करना चाहिए या स्टेफ्री यूज करना चाहिए, सोफी यूज करना चाहिए, वही पैड यूज करने चाहिए, या ये ऑर्गेनिक पैड को यूज करना आज की जमाने की जरूरत है? क्या लगता है? आप लोग प्लीज बोलिए ना, मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। एटलीस्ट कोई तो आंसर करोगे तो मुझे आइडिया आएगा कि आप लोग सुन रहे हो एटलीस्ट। ठीक है, एक्चुअल आई थिंक सो, मुझे लगता है सबको अनम्यूट करके रखा हुआ है पहले से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊंगी इसके जो लेडीज को प्रॉब्लम्स इनके इस पैड से सॉल्व हुए वो। फर्स्ट तो मैं मेरा प्रॉब्लम बताऊंगी। मुझे एक्चुअल आफ्टर बेबी, मतलब बोला जाता है कि आफ्टर बेबी प्रॉब्लम्स पीरियड्स के कम हो जाते हैं, पर मुझे आफ्टर बेबी पीरियड्स के प्रॉब्लम्स एक्चुअल बढ़ गए थे। मुझे फर्स्ट और सेकेंड डे ही पीरियड्स आता था, वो भी दिन के 9 पैड लगते थे। मैं सोफी यूज करती थी, दिन के 9 पैड, और रात को सोते वक्त का एक पैड, ऐसे मिला के 24 आवर्स में मुझे टोटल 10 पैड्स लगते थे। फिर थर्ड और फोर्थ डे में मुझे एक बूंद भी ब्लीडिंग नहीं जाता था। फिफ्थ और सिक्स्थ में वापस नॉर्मल, जैसे अपना थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे में जो कम होता है ब्लीडिंग, वैसे ब्लीडिंग जाता था। ये रूटीन मेरा 1.5 से 2 साल तक चल रहा था आफ्टर बेबी, पर ये कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। जब मैंने ये पैड के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैंने एक्चुअली ये जो डेमो आज हो रहा है, ये आपको एक ऑफिशियली थ्रू हो रहा है, पर हम लोग ये डेमो मोस्ट ऑफ दी फैमिली के सामने करते हैं, क्योंकि फैमिली को भी पता चलना चाहिए कि प्रॉब्लम्स लेडीज कौन से प्रॉब्लम्स से फेस कर रही है। इसलिए ये जो डेमो हुआ था मेरे घर पे, मेरी पूरी फैमिली के सामने हुआ था, और मेरा प्रॉब्लम ऑलरेडी मेरे हस्बैंड को पता था कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मेरे लिए ये पैड्स ले लिए। पर आज टचवुड, मतलब ये पैड के वजह से मेरा जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया। मेरा पीरियड्स रेगुलर हो गया, डेट टाइम टू टाइम आ रही है। मतलब पहले कैसे होता था कि कभी 10 दिन